Hey guys, Beast again from Geek guys. आज का जो vlog है, it is going to be really interesting because I found out that my computer was overheating because I used a really crappy thermal paste. And ये जो है मैंने नेहरू प्लेस से बाय किया था because this was like I was in a run and gun situation. So ये जो है मैंने काफ़ी cheap thermal paste जो है वो मैंने बाय किया. And I thought my computer was hitting 90 degrees very easily. So उसके बाद I tried out. So then I tried out this Master Gel Pro. This was again really great and I have used it on my GPU as well as CPU. So capturing all this data was really difficult for me because I have done like couple of changes to my rig and then I wanted to be a fair comparison, so I have done the readings again and then I was so impressed that I bought the much expensive one. This was the Thermal Grizzlies Cryonaut. So ये जो है it is like one of the top notch. So मैंने अपने Ryzen PC में भी इसे try किया, the 5800X, and the results were really great. So in this video I will tell you how I have got the results and what the difference were. Spoiler alert, the temperatures were not that different, but the performance was increased drastically, and I will like attach the graphs at the last of this video so you can check out the graphs, how good was the performance and what actually the difference was made in terms of performance as well. So for testing मैंने सोचा कि पहले baseline reading ले लेते हैं यहाँ पर. So I was like running Prime 95 like stress test. So it was like demolishing the temps और यहाँ पर आप देख सकते हो that it is running for a little while and temps were like 97, 98. 98 was on the 4th core, last core पर आप यहाँ देख सकते हो, and the power usage was 83 watts. So यहाँ पर 83 watts पर जो है maximum power use कर पाया इतना CPU, and it is really like freaking me out. Because this is like a synthetic test, but यहाँ पर जब भी मैं render कर था I was using DaVinci Resolve, so it was like creeping up to 89 degrees Celsius. That was like really unacceptable for me. So I thought why not make a video out of it, और यहाँ पर I'll show you how you can improve your temperatures on like your current setup without like changing the fans or something. So like to give you a like a rough idea, यहाँ पर दो 120mm के फ्रंट में फैंस हैं and there is like a dedicated fan for the CPU, और यहाँ पर मेरा एक exhaust fan है that is from Fractal Design. So ये काफ़ी अच्छा fan है, और सारे जो fans हैं these are controlled by the motherboard. But airflow is not a issue here. यहाँ पर जो है thermal like it is not transferring the thermal energy fast enough that the CPU is throttling down. और यहाँ पर as you can see here almost सारे जो cores हैं वो 95 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं. 96 is like the baseline. यहाँ पर 96 डिग्री almost सारे cores जो हैं वो यहाँ पर stable हैं. So this is like really concerning me. So let's get started with the work. So after testing the Master Gel Pro from Cooler Master, I thought why not get a better one instead. और मैंने अपने next rig के लिए I bought the Thermal Grizzly. So ये conductor node का है, it is like best you can get. और यहाँ पर as you can see यहाँ पर हमारा 5800X 8 core processor है. It is on 63% load and it has topped 92 degrees. और पैकेज पावर जो है वो 119.60 watts and it is hot. It is really hot. It is untouchable here. and यहाँ पर आप देख सकते हो it is a 240mm radiator, तो cooling जो है वो काफ़ी adequate है for that. But it still is like I think so it is not going to the peak power, और यहाँ so it is at 92 degrees which I am not like comfortable at. So I think so कि अगर हम इसे replace करते हैं with a thermal grizzly, definitely the performance will increase, क्योंकि जो thermal paste मैंने पहले use किया था it was not good, and especially I am also a bit concerned क्योंकि the radiator is really hot and I don't know what's going to happen. So I'm just removing the GPU screws. Make sure that you are okay with voiding your warranty, because removing this will void your warranty. And yeah, be careful because GPU is sometimes like half of the budget, क्योंकि कई लोग जो है half of the budget जो है वो अपने GPU पे spend करते हैं. So it is like a really expensive deal if you mess up. This is a 1050 Ti and you will not like बिलीव कि ये जो ग्राफिक कार्ड है आज की डेट में भी 15,000 रुपीज़ के लिए सेल हो रहा है.
and I got it for 11,000 rupees back in 2017. You can just wash this aluminium piece. So I will wash it afterwards. But for the PCB, I always recommend कि आप जो है cotton swab लेके उसे clean करें, because it is the best and the safest way. So as you can see, यहाँ पर काफ़ी पुराना जो है वो thermal paste है, and it is like all dried. So ये क्या ही thermal conductivity provide कर रहा होगा. That is one of the biggest issues. So I'll just remove it, and you should get like मतलब वैसे तो isopropyl alcohol कहते हैं pure, but I have this like hand sanitizer, or it will do the job just fine. So I'll just clean it like this. यहाँ पर डाई को जो है बिल्कुल हमने चमका देना है, so that थर्मल पेस्ट जो पुराना ये जो बिल्कुल ही सूख चुका है ये रिमूव हो जाए. So guys, as you can see here, यहाँ पर मैंने almost सारी चीज़ें जो है वो वाटर में धो दी हैं. I have also washed the fan, but hear me out. यहाँ पर जो fans हैं, these are like really robust, और these like work just fine. अगर आप इनको पूरा water में डिब्बी कर देते हो, these just work really fine, because I have personally made some projects back in my childhood with these fans in like underwater use, so these work just really fine. आपको कोई issue नहीं आने वाला है. And I have also washed this. यहाँ पर आप देख सकते हो that it has like none of the dust here, और यहाँ पर भी जो है it is like really clean. So यहाँ पर भी it has like none of the like bad stuff that was present here. यहाँ पर भी there is water, so it will dry, it will take some time, and mostly the first thing that we are going to like reapply is the CPU heatsink. So यहाँ पर I will just clean it up. So best thing is like you get a pack of like these cotton swabs, और ये बेस्ट रहती हैं, and these are like one of those जिस पे टूथपिक लगी होती है, so you can like easily clean this up. यहाँ पर so as you can थोड़ा सा अभी भी जो है यहाँ पर बचा है थर्मल पेस्ट, just scrape it off really. So I think so पहले जो है हमें GPU को assemble कर लेना चाहिए. So this is the GPU, and where is the thermal? Let me just assemble this. So I've cleaned it up as much as it is possible. So now we will just apply the thermal paste. So यहाँ पर I have applied a really thin layer. यहाँ पर एक बिल्कुल ही thin layer जो मैंने यहाँ पर thermal paste की लगा दी इसके ऊपर. As you can see here, the whole die is covered. So as you can see यहाँ पर जो पूरी die है वो covered है. So let's just also like screw this in. So our GPU is back to complete, and it looks a lot more tidier, because इसमें से जितना भी अंदर से जितना भी dust था, we have removed it and like applied a fresh thermal paste. So it should hopefully be a little cooler, और fans भी थोड़ा कम जो है वो spin करेंगे, and it will perform a little better. So let's apply the thermal paste over the CPU also, and I think so like it will be like a really good coat over here. So the fan condition of MSI is really horrible. यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जो है सिर्फ एक fan header है यहाँ पर for the CPU, and the other one is here for the AIO, और बाकी सारे जितने भी fan headers हैं these are in the bottom. So you cannot plug in like two fans for the 240 mm radiator. Thankfully जो Entech की मेरी power supply है उसके साथ एक मेरे को Y splitter मिलता है for the fans, and MSI do not even have the courage to like include this in the motherboard box.
So like after an hour of messing around, यहाँ पर हमारे fans जो हैं वो swap हो गए हैं. Now the RGB one is at the back and the blue fans are on the top and the front configuration is more or less the same. So let's try to like wrap it up and try to check how the thermals have like changed. Are they improved or they worse? So guys, test is running for like almost 16.5 minutes और यहाँ पर temperatures आप देख सकते हो maximum is 65 डिग्री. 65 डिग्री भी एक बार रीच किया था एंड इट हैज़ ड्रॉप्ड. यहाँ पर अब 64 डिग्री पे कांस्टेंट है. सो इट इज़ परफॉर्मिंग रियली ग्रेट. एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हो 41 फ्रेम्स पर सेकेंड यहाँ पर एवरेज है एंड इट इज़ रनिंग रियली स्मूथली. पिछली बार जब हमने टेस्ट किया था तो इट वाज ऑलमोस्ट 71 to 72 डिग्रीज, बट अब यहाँ पर आप देख सकते हो 64 डिग्री ऊपर टेम्परेचर दिखा रहा है. सो इट इज़ लाइक ड्रॉप्ड फॉर like 6 or 7 degrees. So it is also really great. So अभी थोड़ी देर तक मैंने इसे चलने दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 92 वाट्स, इवन 93.69 मतलब ऑलमोस्ट 93.7 वाट्स पर यहाँ पर चला गया था. एंड वन मोर थिंग, पिछली बार जब मैंने टेस्टिंग की थी तो मैंने जो है फैंस को फुल स्पीड पे नहीं रैम्प अप किया था. सो ये असूस का यूटिलिटी है. सो यहाँ पर आई विल जस्ट रैम्प अप द फैंस. सो अब जो फैंस जो है वो फुल स्पीड पे हैं एंड इट डिडेंट इवन रिक्वायर दैट कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 93 बहुत आराम से अब जो है वो टच कर रहा है बिकॉज द फैंस आर इन फुल स्विंग. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 95 डिग्री ऑलमोस्ट मैक्सिमम गया, बट नाउ द पीक पावर इनपुट इज़ लाइक ओवर 93.7 वाट्स एंड मेरे हिसाब से जो है ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लॉक स्पीड्स भी आप यहाँ देख सकते हो दैट ऑल आर अबव लाइक 4100. तो ऑलमोस्ट सारे जो है अबव हैं एंड इट्स वर्किंग रियली ग्रेट. यहाँ पर सस्टेन कर रहा है 90 वाट्स आराम से सस्टेन कर रहा है. दैट इज़ अ रियली ग्रेट डील. की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी अपलिफ्ट मेरे को ज़रूर मिलने वाली है यहाँ पर. So as you can see here, यहाँ almost 10 minutes से टेस्ट रन कर रहा है and the CPU is averaging above 120 watts very easily. 120 watts से नीचे बहुत ही कम डिप कर रहा है ये CPU. The clock speeds are almost 4.8 GHz on each core. यहाँ पर 4.8 GHz सारे कोर्स जो है वो हिट कर चुके हैं. I know it is at like 91 degrees, but it is going constantly over 120 watts very easily. And the max we got is like 91 degrees at 128 watts. 128 watts is 10 watts higher than the previous core, so that is like a win-win situation. So guys, as you can clearly see here, यहाँ पर जो हमारा 1050 Ti है वो सबसे बेटर हमें यहाँ पर थर्मल्स प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज द 1050 Ti here has decreased almost 9 डिग्री सेल्सियस. बट यहाँ पर हम दोनों CPU देख सकते हैं ओनली 1 डिग्री सेल्सियस का हमें इंक्रीज मिला है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट दैट इज नॉट द केस. When we move on to the another slide, now you can see how the graph drastically changes. I know this also is not a bigger of a change, बट यहाँ पर जितनी हमारी TDP इंक्रीज हुई है दैट मीन्स दैट परफॉर्मेंस जो है वो और पुश कर रहा है CPU. एंड इफ इट इज़ एट दैट 90 डिग्री सेल्सियस और लाइक 96, 95 या 91 डिग्री सेल्सियस पर है, it is performing much better, like almost it is using 10 watts more. So यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 10 watts अगर वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, so that means clock rates are higher than previous. So guys, that was it for this video. I hope this video was informative enough. Please make sure that you like this video and also consider subscribing to my channel. Share this with your guys and friends who are having issues with your computers or thermal throttling. So this was it for this video. I hope to see you in my next video. Thank you guys.